Hello, Ambika. Today we have Ambika with us, and she is the famous Ambika from Taarak Mehta ki ooltah chashmah. Hello, Ambika. How Hi, are you? I'm good. Thank you for having me for this Thank talk. you so much, Ambika. I'm really honored to have you over here. And I'm Dr. Paula Goel, pediatrician, adolescent specialist, and lifestyle medicine expert from Faith Clinic. So, Ambika, tell Yeah. me, what is your take on chronic diseases? What do you know about chronic diseases, and what are you aware of that? Well, now being in a different consciousness, my definition has definitely changed. It is just right now for me, chronic diseases are something that can be as easily tackled as cold or cough. It's just that we need to reach the layers and the root of it. And chronic diseases happen over a period of time because of um, holding back certain emotions or inability to express ourselves or resolving certain issues of our life. They all deposit into our body and they cause the dis-ease in us over a period of time. So, what you're trying to say is that when we are stressed out, Yes, so there is a stress pattern which works in all of us, and over a period of time, it leads to damage within the body, yes. and we carry a lot of baggage, and there is an emotional turmoil which occurs. So, there is a psychological impact, emotional impact, and this finally leads to chronic disease. Can Right. you A tell me small what? example Mhm. of what you just elaborated it in a proper scientific way for a layman to understand. रोजमर्रा की जिंदगी में, is it okay if I use Hindi? Completely. सो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सुबह उठने से लेकर सोते हैं तब तक बहुत सारी चीजें हमें या तो गुस्सा दिलाती हैं या चिड़चिड़ा बनाती हैं। फिर वो समय पे न जगने की वजह से हो, समय पे चाय न मिलने की वजह से हो, न्यूज़पेपर, छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम आसानी से फेस कर सकते हैं, पर हम चिड़चिड़ा बनते जाते हैं। रोज रोज वही पैटर्न, रोज कुछ भी बदलाव नहीं लाते हैं हम लोग। जबकि अगर हमारा पड़ोसी अगर वही करे तो हमें लगता है अरे ठीक है यार, एक दिन लेट आ गया न्यूज़पेपर, उसमें क्या है, चिल मार। बट व्हेन इट हैपेंस टू अस, वी आर लाइक अरे अभी तक आया नहीं यार, रोज 8 बजे पेपर डाल के जाता है, 8:15 बज गया, आज तक पेपर नहीं, अभी तक पेपर नहीं आया। सो दीज स्मॉल ट्रिगर्स ये जमा होते जाते हैं रोज, और पता भी नहीं चलता कि कब एक बहुत बड़ा मकान बना लिया होता है आपके दिमाग में, और उसने मकान सिर्फ नहीं बनाया होता है, बहुत बच्चे भी पैदा किए होते हैं। यानी गुस्सा, अपमान, शर्म, जिन्हें हम ऐसी चीजें कहते हैं कि हमें लगता है वो हम में है ही नहीं, नहीं मुझ में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे दिमाग में, हमारे स्वभाव में घर बना लिया होता है। और जब ऐसे कुछ चीजें हमारे सामने होती हैं, हम अपने आप को काबू में नहीं रख पाते हैं और हम गुस्सा हो जाते हैं, बेवजह रोने लगते हैं या फिर मायूस हो जाते हैं। ये उन सारे चीजों की वजह से है जिन्हें हमने अंदर दबाए रखा है, उन्हें बसाया है और उन्हें इतने हद तक बढ़ा लिया है कि वो एक दिन किसी रोग का रूप लेती है। ये है पूरा एक्सप्लेनेशन जो पॉला मैम ने अभी साइंटिफिक तरीके से आपको बताया। ये है वो छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम ठीक है यार बाद में देखते हैं, हाँ तो क्या हुआ, मुझे तो नहीं हुआ ना, उसे हार्ट अटैक हुआ ना, वो सिगरेट पी रहा होगा इसलिए, वो शराब पी रहा है। मैं शराब पिए बिना, मैं तंबाकू खाए बिना भी मेरे दिल को चोट पहुंचा सकती हूँ अगर मेरे इमोशंस को मैं काबू में ना रखूं, मेरे इमोशंस पे मैं वर्कआउट ना कर सकूं, उन्हें रिजॉल्व ना कर सकूं, उन्हें मैं तो पूरी तरह से हैंडल ना कर पाऊं, तो वो मेरे दिल को इफेक्ट कर सकती है। तो ये अगर आप गलत फहमी में है कि सिर्फ शराब पीने से, तंबाकू खाने से, नॉनवेज खाने से, मोटापे की वजह से आपके हार्ट पे या कोई भी तरह की डिजीज आपको इन चीजों से ही सिर्फ हो सकती है,
तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए। कोई भी रोग का जड़ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। ये चीजें कुछ नामचीन चीजें हैं जो बदनाम हुई है, लेकिन कुछ बहुत ऐसी चीजें हैं आप में, जाने अनजाने में आप में है, जिन्हें आप जब तक निपट नहीं लेते पूरी तरह से, वो एक बड़े रोग का रूप शायद ले सकते हैं। प्रिसाइसली, थैंक यू सो मच अंबिका। यानी कि अगर थॉट्स होते हैं तो थॉट्स के साथ इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, और इमोशंस के साथ कुछ एक्शंस होते हैं हमारे, and those actions finally, it can be good actions, it can be bad actions, it can be any form of actions, including getting overworked, जल्दी जल्दी करना, इमोशनल रिएक्शन करना, इमोशनल रिस्पॉन्स हो जाना. So all this would cause some effect on our body, and over a period of time it Yes. causes a lot of lifestyle diseases or chronic diseases. क्या आपको मालूम है what is the age at which these diseases start? Sadly, there is no age. It can begin any time. It comes very quietly. It starts Yes, building up. but what is the earliest age? See, Earliest age. Paula, very now that we know that even school-going kids are Yes. affected with stress. You know, a lot of competition, lot of judging in between the children. I've seen 5-year-old girls standing in front of the mirror and saying, "I've put on a little weight." What pressure they are, what Body are they shaming seeing? is very What huge. are they observing? What is being fed in their environment? You know, they are stressed. They don't want to have that extra chapati. They're so conscious. They're so scared. Dar. Yes. So basically the disease process जो रहती है ये बहुत जल्दी चालू होते हैं. It starts off उसमें very कोई early. उम्र नहीं रहता. So it earliest it starts off is probably in the teenager age group. Yeah. And by the time ये manifest होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, you are in your late 20s or early 30s. Yeah. Sometimes teenage group में भी manifest हो जाते हैं. Yeah. High blood pressure, Yes. pre-diabetes, Sugar. Yeah. dyslipidemia, ये Right. सारे चीजें young age में भी चालू होते हैं. But if it is not manifested, तो ये जाके late 20s या early 30s में तो manifest होते ही है. Right. वो छोड़ते नहीं हैं आपको, वो पीछा नहीं छोड़ते हैं. पीछा नहीं छोड़ते हैं. So what do you think, like with you are working with the TV industry and the film industry, so there is a lot of stress. It's like a corporate industry, right? So what do you say कि अगर जो लोग ऐसे stressful jobs में काम करते हैं, so how does it impact their lives? Just not in terms of chronic stress. How do you think all this impacts work-life balance and health? For me, Paula, it helped me by expressing gratitude for everything, everything. Even if I'm late, even if I'm on time, even if I'm in traffic, even if there is no traffic, what is the main thing? I'm working. I have a job. I'm working. I'm getting money. Okay? आप ये जो चीजें आपके लाइफ में हैं, जो शायद किसी के लाइफ में ना हो, आप Precisely. उस तरह से देखिए. आप ये देखिए, अपने आप को अपने कंपैरिजन में रखिए. मैं किसी और को कंपेयर करूंगी मेरे लाइफ को, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसने उसकी जर्नी कब शुरू की हो, मैंने मेरी जर्नी कब शुरू की है, किन हालातों में शुरू की है और कैसे शुरू की है. माय स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड ओरिजिनल. That makes me a complete different human being than all the people in the world. Nobody Precisely. has a story that Ambika has. Nobody has a face that Ambika has. You may having my face, my twin may be having my face, but not all the qualities and not the behavior that I have, not the understanding that I have. That makes each person special. God has put in so much of effort to create us so differently and beautifully. We यानी should focus on what we have rather than cribbing over what we don't have.
यानी कि आपका कहना है कि each person is unique, and Yes, when we accept our uniqueness, we become special yes, and we stop comparison. So yes, automatically अपना stress कम हो जाते हैं. And when the yes, stress decreases, your chronic diseases would definitely decrease. yes. Or even if somebody is afflicted with some chronic disease, they would be in a better position to take care of their own health. Guilt True, trip और emotions control पे आ जाएंगे. true. So any last message which you would want to say to This your may sound fans, very to our cliched. viewers, to our patients? This may sound very cliched, पर हम एक ऐसे ब्यूटीफुल प्लैनेट पे रह रहे हैं जहाँ पे सब कुछ मौजूद है, जहाँ पे प्राणी हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे फल फूल है, अलग अलग तरीके के जाति के इंसान हैं. हम सब एक बेहतर जिंदगी ऑलरेडी जी रहे हैं. हमें सिर्फ एहसास होना चाहिए कि हम ऑलरेडी एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं. हम उस एहसास के इतने से दूरी पे हैं, इतने से ही. यकीन मानो, इतनी सी दूरी. आप उतनी दूरी पार कर लो, आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है. वेरी ब्यूटीफुल. Well spoken, Ambika. Truly and well said. And many times in our journey of life, हम last moment में आके छोड़ देते हैं because we get fed up. Maybe it is just one last step जो हमें लेनी है, but we get so stressed out and we get bogged down and we just don't take that last. So I said that last step kabhi kabhi is the one which is the final step for complete decreasing your stress levels and to accepting yourself. But sometimes at that point, a person may go into such a crazy situation of stress, and then they invite so many diseases of diabetes, blood pressure, dyslipidemia, heart disease. और अभी तो उसके अंदर we have also added cervical spondylosis, cancer, depression, True. anxiety, body shaming, PCOS. The list is so endless. And actually, the solution is so simple. Yeah. The solution is so simple, right? Yes. Yes, I Thank you agree. so much, Ambika. Thank Thank you, you. Paula. It was Love such you. a God bless pleasure you. talking to you.